Uh, People, let's start. In the last session that we had discussed, we were looking at the various okay, we are back. Girls, boys. Okay. So we are saying that last time we discussed that the drainage of India would be divided into four types: the Himalayan, peninsular, east flowing, and west flowing rivers. Okay. Out of that, we started with the Himalayan drainage, and these were the characteristics of it. We said that the Himalayan drainage basically consists of the Indus, Ganga, and the Brahmaputra. That they are perennial rivers that we already discussed. During the monsoons, it rains. During the summer, the snow melts. So clearly, the rivers will always have some form of water, and in the form of snow or precipitation. Okay. The general features that you see over there are deep gorges, V-shaped valleys, rapids, waterfalls, usually in the upper coast, where the river performs extensive erosional work, usually downward erosion. Okay, that is the erosion that the rivers usually perform. And in the lower coast, obviously, because the rivers are long and they carry huge amount of silt and sediment, clearly they will form great depositional landforms also. So you will see flat valleys, oxbow lakes, floodplains, braided channels, deltas, etc. Usually in the lower coast. That is what most of the Himalayan rivers will have. Okay. And another important characteristic of this river is these rivers is that they shift courses very frequently. Okay, whenever there is more water, what happens is the channel cannot contain all that water. The water goes out, and the river flows in a different way. Also, because there is a lot of silt which is deposited in the river channels, and that once again that silt also cannot be contained within the channel, which means that the river is going to try to take the path of least resistance. Is going to try to go around the silt, which is why the river will change courses. Okay. Okay. Now, the very first theory of the evolution of the Himalayan drainage, we say that there was, instead of having three dismembered rivers like the Indus, Ganga, and the Brahmaputra, there was one single river called as the Shivalik. Okay, and वो सीधा असम से लेके पंजाब तक जाती थी. All that river used to go from Assam all the way up to Punjab and onwards on to Sindh, and it used to discharge in the Gulf of Sindh, similar to whatever the Indus does today. Okay. So, looking what happened between this period, what happened was there was in the Pleistocene period, there was the upheaval of the Western Himalayas. Okay, Western Himalayas started rising up. And because of that, clearly the drainage of Indus and Ganga systems split up. Okay, so we are saying that essentially over here in this section, okay, since the Western Himalayas started rising up, so this river could not be one continuous river. The Ganga drainage went to one side and the Indus drainage went to another side. Okay, that is what happened. And then there was obviously the downthrusting of the Malda gap. You're saying this gap, okay, this one, the one near West Bengal, Bangladesh. Okay, that gap, uska downthrusting ho gaya, wahan pe fault aa gaya. There was a proper fault over there, and because of that, the Ganga and the Brahmaputra drainage also split up. Okay, so Ganga and Brahmaputra ka drainage uski wajah se split up ho gaya. So because of this different reasons, you're saying कि Ganga and Brahmaputra systems be split up हो गए, and this also, the Indus and Ganga systems also got split up because of the Potwar Plateau and the Himalayan mountains, okay, Western Himalayas, and that is why ये जो major Shivalik Indo-Brahma या Shivalik नाम का river था, that got dismembered into Indus, Ganga, and the Brahmaputra. Okay, you people at the very back, spectacles, come and sit here. You and your friend. Black shirt, sit here. Now you, black shirt, sit here. You both in the front.
You girls split up. All right, let's begin with the very first system. We say the Indus system. Okay, let's look at the Indus River. पहले इंडस रिवर को ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी ट्रेस करने जाते हैं. दिस इज द कैलाश माउंटेन, दिस प्लेस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द कैलाश माउंटेन. अब यहाँ से आपको दो रिवर्स का मेजर सोर्स मिलता है, एक ये वाली इंडस और दूसरी ब्रह्मपुत्र. ओके, वो सतलज भी उसी के पास से निकलती है. So we are saying this is the Kailash mountain. You find that the Indus River rises among the glacier over there. Okay, तो Indus River यहाँ से निकलती है. It's a very strong river. एंड देन वहां से वो सीधा ऑल द वे कश्मीर के थ्रू ट्रैवल करके बाहर निकल जाती है. ओके, इंडस का पूरा लेंथ बहुत लंबा है. इट इज लॉन्गर देन द गंगा इटसेल्फ, बट इंडिया में उसका लेंथ कम है. सो इफ यू आर गोइंग टू रैंक रिवर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, इंडस विल ऑलवेज रैंक आफ्टर द गंगा. ओके, डिस्पाइट इट्स लेंथ बीइंग लॉन्गर देन द गंगा ओवरऑल लेंथ, इफ यू आर रैंकिंग रिवर्स इन इंडिया, इंडस विल बी shorter river. Okay, but if you're ranking rivers worldwide, then Indus will be a longer river. Please remember this distinction. So we are saying this is where the Indus goes. Indus यहाँ से निकल के जाएगी ऑल द वे कश्मीर से, सिर्फ कश्मीर से ट्रैवल करती है, लद्दाख एंड कश्मीर से, एंड देन इट विल कम आउट फ्रॉम हियर. ओके, ये यहाँ पे पाकिस्तान रीजन में एंटर करेगी. समझा यहाँ तक का कोर्स? Okay, now we'll track the Indus over here. We say Indus का दूसरा नाम जो है, historical नाम is going to be Sindhu. Okay, that is what we used to call it, and it happens to be the westernmost of all the Himalayan rivers in India. Okay, total length of the Indus river system is around 2880 kilometers. In India, it is 1140. Okay, kilometers. Now ये river जो है वो एक कैलाश माउंटेन में टिबेटन रीजन में बोखारछू नाम के पास एक ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट करती है. ओके, रिमेंबर द नेम बोखारछू. ओके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर, फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखारछू इन द कैलाश माउंटेन सिस्टम. ओके, at a very high altitude at 4000 meters high above. Okay, वहां से निकलती है. And वहां पे in Tibet region जहां से वो निकलती है, in that region it is famously called as the Singhi Kamban. Okay, उसको सिंघी कंबन बुलाते हैं, which in the local language translates as the lion's mouth. Okay, तो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. देयर आर 3 रिवर्स जिनके अलग अलग नाम मिलेंगे आपको अलग अलग रीजन्स में, एंड हर किसी का नाम अच्छे से याद कीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू क्वेश्चन यू ऑन दैट. आपको इंडस के बारे में पूछेंगे, सतलज का एक अलग नाम आता है और ब्रह्मपुत्र का एक अलग नाम आता है, तो ये सबके नाम आपको पता होने चाहिए. ओके, द इंडस इज फेमसली कॉल्ड एज द सिंघी कंबन और द लायंस माउथ इन द टिबेटन रीजन. ओके, फिर उसके बाद ये यहाँ से जब निकलती है ओवर हियर, इफ यू सी द इंडस रिवर, तो ये यहाँ से जब निकलती है तो लद्दाख एंड जस्कर के बीच में से ट्रैवल करती है. ओके, इट ट्रैवल्स बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंजेस. ओके, एंड अगर रीजन वाइज देखा जाए तो पहले लद्दाख रीजन में से जाएगी और फिर इंडिया के बल्तिस्तान रीजन में से जाएगी. ओके, इट विल पास थ्रू द लद्दाख एंड द बल्तिस्तान रीजन्स, एंड व्हेन इट हैज टू एंटर पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के दर्दिस्तान रीजन में एंटर करती है. ओके, इट एंटर्स इनटू द दर्दिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान. सो नियर Chillar. Okay, that is the place near Chillar in Dardistan region of Pakistan. वहां पे वो एंटर कर जाएगी. Is this clear? Is the track clear of the Indus? You say वो कैलाश माउंटेन से निकलती है बोखारछू से. Okay, देन वहां से इंडिया में ट्रैवल करती है. 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से जाएगी, नीचे जस्कर है, ऊपर की तरफ लद्दाख है. ओके, तो वो 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से जाएगी. अगर इंडिया के रीजन्स देखने हैं थ्रू विच द रिवर ट्रैक्स, then it is going to be the Ladakh first and then the Baltistan region. And when it enters Pakistan as a country, then that will be near Chillar in Dardistan region of Pakistan. ठीक है, चलेगा? That is how the Indus is going. Now, let us look at the various systems. This is another thing that they love to question you on, the tributaries of various rivers. And I'm not just talking about the Himalayan rivers, they'll question you on tributaries of all kinds of rivers, including the peninsular rivers. As I told you the other day, उनको गोदावरी के tributaries पूछना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी prepare करके रहिएगा. So here we are looking at the major tributaries of the Indus. Try to understand when the information goes into left bank tributaries and right bank tributaries. Okay, we say अगर ये इंडस का फ्लो है, हाँ, we are saying इंडस ऐसे फ्लो कर रही है ना, this is the way Indus is flowing, right? It is moving from the east towards the west. Okay, तो अगर ये ऐसी है तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? दिस इज द राइट बैंक. ओके, एंड विच आर द लेफ्ट बैंक? दीज आर द लेफ्ट बैंक. इज दिस क्लियर? हाँ, किसी भी रिवर का खुद का कोर्स जैसे होगा वैसे ट्रैक कीजिएगा, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड विच आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ओके, ठीक है, so do not mess them up. Sometimes UPSC has even asked you a question कि which of these are left bank tributaries, और उसमें वो कभी-कभी right bank भी mix कर देते हैं. So be careful which tributaries are which. Okay, ठीक है. So here we are looking at the various tributaries of the Indus, and we are looking, this is the part. Okay, ये अभी Indus के right bank tributaries देख लीजिएगा.
वो पाकिस्तान की तरफ से जो मोस्टली आते हैं। ये तो इंडिया के हैं, शोक, नुब्रा, गिलगिट, ओके, दीज आर फ्रॉम इंडियन पार्ट। ओके, देन वहां से वो स्वैट वैली का नाम सुना है ना, तो स्वैट करके एक रिवर आती है। देन यू हैव कुनार, काबुल नाम की एक रिवर है, तोची, गुमाल, कुंदर एंड झोब। ओके, दीज आर द मेजर रिवर्स ओवर देयर इन द इंडस, फॉर द इंडस। ओके, जो यूजुअली ऊपर से आती है, मतलब राइट बैंक से आती है। ओके, व्हाट हैव आई मिस्ड ओवर हियर? Shok, Gilgit, Zaskar, Hunza, Nubra, Shigar, Gasting, and Dras. Okay. So remember in this figure also, as well as in this in the text also, rivers के नाम याद रखिएगा. I'm repeating again and again. जब आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम्स पे सवाल पूछते हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चंस पूछते हैं. They definitely ask you questions on tributaries. Okay. Then in the lower part, of course, वो सारे famous है आपके, वो 5 rivers, right? You have the Satluj, Jhelum, Satluj, Bias, Ravi, Chenab, and Jhelum rivers for the Indus. Okay, they are the major tributaries of the Indus. And finally, वो Indus all the way पाकिस्तान से travel करके कराची में जाके ये करती है, discharge कर लेती है. Okay, in the Arabian Sea near Karachi. All right. Now we are not that interested in the right bank tributaries. We are looking at the left bank tributaries of the Jhelum first. Okay, of the Indus first. We'll start with Jhelum. Okay. Once again, when you are talking about these rivers, उनका origin point याद रखिए. अगर वो कहीं मेजर कहीं गॉर्जेस बनाते हैं या किसी लेक में से फ्लो करते हैं, किसी माउंटेन्स को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो वो याद रखिएगा. एंड इफ दे हैव different names somewhere else, तो वो याद रखिए. Okay, if they meet some other river at some confluence point, please remember where those confluence points lie. Okay, ठीक है. तो we begin with झेलम first. Okay, झेलम इंडिया में ही राइज करती है और इंडिया में ही रह जाती है for a long period of time. We are saying it rises at a spring at rises from a spring at Verinag, situated at the foot of the Pir Panjal. Okay, यहाँ पर पीर पंजाल माउंटेन्स है ना, जैसे हिमालयाज के. So we are saying वहां से राइज करेगी वेरेनाग से, एंड देन वो श्रीनगर से फ्लो करती है. फेमसली श्रीनगर इज फेमसली ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम, राइट. एंड वुलार लेक में से पास कर जाएगी. रिमेंबर विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. सो वो वहां से पास करेगी एंड इट फॉर्म्स अ डीप गॉज. ओके, बहुत डीप गॉज फॉर्म करती है. एंड झेलम को यहाँ, चेनाब को यहाँ पे जाके ज्वाइन करती है. कैन यू सी झेलम एंड चेनाब आर मीटिंग ओवर हियर. ओके, पाकिस्तान में त्रिमो झांग के पास वो वहां पे पाकिस्तान चेनाब को जाके ज्वाइन करेगी. ओके, ठीक है. इज दिस क्लियर? इंडिया में कहाँ पे राइज करती है? वेरनाग के पास, इन जम्मू, इन एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल. एंड देन श्रीनगर एंड वुलार लेक में से पास करते हुए ऑल द वे पाकिस्तान के थ्रू इट विल गो टू चेनाब. इट विल गो एंड ज्वाइन द चेनाब. ओके, चेनाब को खुद को देखिए. Chenab itself starts as Chenab itself is known as the largest tributary of the Indus. One more thing. Largest and longest tributaries भी याद कीजिएगा रिवर्स के. Okay, that is also something. You understand the difference between largest and longest ना? Longest meaning lengthwise जो सबसे लंबी होगी, largest meaning जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लाएगी पानी का, है ना? The greater discharge of water whichever river brings will be known as the largest river. Okay, so we are saying Chenab happens to be the largest river, largest tributary of the Indus. वो 2 स्ट्रीम्स से बनती है. हिमाचल प्रदेश में एक केलोंग नाम की जगह है टंडी के पास, वहां पे चंद्रा एंड धागा करके 2 स्ट्रीम्स करके निकलती है. दे जॉइन ओवर देयर एट टंडी. वहां पे द रिवर, वहां से द रिवर इज फेमसली कॉल्ड एज चंद्रभागा, एंड उसी रिवर को हम चेनाब के नाम से बुला लेते हैं. ओके, दैट इज द सेम रिवर दैट वी कॉल एज चेनाब. सो दिस अगेन राइजेस इन हिमाचल प्रदेश. प्लीज रिमेंबर कौन से स्टेट्स में उसका ओरिजिन है. चेनाब, रावी विल बोथ राइज इन हिमाचल प्रदेश, whereas even बियास for that matter. Whereas this one, Jhelum itself rises in Kashmir. Okay, वो वहां पे राइज करेगी. Now we are saying next आती है रावी. Okay, रावी जो रिवर है वो जाके वो रोहतांग पास के पास कुल्लू हिल्स जो है वहां से राइज करेगी. ओके, देर आर कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, तो वहां से राइज करेगी. फेमसली चंबा वैली से फ्लो करके. चंबा वैली इज अ वेरी पिक्चरस्क प्लेस. तो प्लीज रिमेंबर इट इज द रावी दैट, वहां पे कोई फेस्टिवल भी होता है. मे यू बोथ हेलो, स्टैंड एट द बैक ऑफ द क्लास. I wonder why you even attend this lecture. Anyways, तो वो चंबा वैली से पास करती है. एंड यहाँ पे जाके ये जो चेनाब है, कैन यू सी द रावी ओवर हियर? कैन यू मेक आउट द रावी ओवर हियर? इट इज जॉइनिंग ओवर हियर. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी सराय सिंधु. ओके, पाकिस्तान में सराय सिंधु नाम की एक जगह है, वहां पर जाके वो चेनाब को ज्वाइन कर लेगी. इसका मतलब क्या होता है? झेलम भी एंड रावी भी बोथ आके चेनाब को ज्वाइन करती है. There is a reason why Chenab is the largest tributary, because it will bring so much volume of water. It has 2 major tributaries in the form of Ravi and the Jhelum. Okay, ठीक है, clear? नेक्स्ट यू गो टू बियास. ओके, फिर आप बियास की तरफ जाओ. बियास जो है वो बियास कुंड या रोहतांग पास से निकलती है. वंस अगेन हिमाचल से निकलेगी, कुल्लू वैली से फ्लो करती है. प्लीज रिमेंबर रावी फ्लोज टू द चंबा वैली, whereas बियास फ्लोज टू द कुल्लू वैली. ओके, तो कुल्लू वैली से फ्लो करती है. एंड 2 फेमस गॉर्जेस इट फॉर्म्स इन द धौलाधार माउंटेन्स एट काटी एंड लारगी. ओके, काटी एंड लारगी के पास वो 2 फेमस गॉर्जेस फॉर्म करती है.
and finally आके पंजाब प्लेन्स में आ जाती है. Okay, and the point where it meets the Satluj is at Harike. Okay, can you see this point over here? This is where it is meeting Satluj. Okay, तो वो सतलज को हरिके के पास मिलती है. Remember we have a barrage over there and dams and stuff like that. हाँ, तो हरिके के पास आके मिलती है. Okay, so that is the Bias. Lastly, you go to the Satluj. Okay, Satluj famously, Satluj ना बहुत famously यहाँ पर देख लीजिएगा. You can see the Indus rising over here. Okay, you can make out the Indus, right? This is the Satluj. ये रही आपकी सतलज निकलने वाली यहाँ से राकस लेक के पास से निकलती है. You can make out a lake over here named the Kailash Mountains. So you're saying यहाँ से निकलती है. तो almost Indus को जब तक इंडिया के बाहर है तब तक वो almost Indus को parallel ही चलती है. Okay, it flows almost parallel to the Indus. So सतलज यहाँ से निकलती है. We are saying the सतलज का origin जो point जो है वो इंडिया के बाहर है. जैसे Indus का origin point बाहर है ना, वैसे ही सतलज का भी origin point इंडिया के बाहर है. तो वो राकस लेक या मानसरोवर से राइज करती है. वहां पर उसका लोकल नेम इज लांगचन खंबाब. ओके, द लोकल नेम इज लांगचन खंबाब एंड इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस. फिर अपने यहाँ पे जब वो हिमाचल प्रदेश वगैरह पास करती है तो पहले रूपर के पास एक गॉज बनाएगी, शिपकिला पास के थ्रू जाएगी. एंड इट्स एन एंटीसेडेंट रिवर. व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटीसेडेंट रिवर? वी हैड डिस्कस्ड दिस अर्लियर. इट स्टार्टेड बिफोर द माउंटेन्स. करेक्ट. Before the mountains existed, the river was already flowing over there. Okay, and while the mountains were coming up, clearly it went ahead and eroded a valley or a gorge to the mountains. Okay, so that is essentially the Shipkila. That is essentially the Satluj. So Satluj is a famously antecedent river, and ये भाखरा नांगल कैनाल के डैम को सिस्टम को फीड करती है. नहीं, I completed my sentence. बोलिए. It is a brackish lake could be brackish water. It's at a very high altitude. Na? Usually the colder places you are in, the denser the water is. Obviously, they become saltwater lakes. A fresh water. Yeah, no, but clearly it will have other tributaries also coming by. Na? It might start from a certain glacier or a lake, but it will always, it has a lot of time to move across places. Na? And if the water does not stay in one place, it is very difficult for it to be brackish there. Remember, it is going to flow here and there. There's always going to be this. So it is very difficult. Usually, denser water tends to be brackish, or hotter, non-moving, evaporated water tends to be brackish. So we are looking at both places. All right. Is this clear, people? So please remember, आपके जो ये 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस के, उसमें से झेलम जो है वो जाके चेनाब को मिलती है और रावी भी चेनाब को जाके मिलती है. ओके, वेरएस बियास जो है वो सतलज को मिलती है. एंड फाइनली सतलज एंड चेनाब आर गोइंग टू मीट टुगेदर. एंड जब वो दोनों मिलते हैं तो उसको पंचनाद कहते हैं. ओके, फेमसली व्हेन झेलम एंड चेनाब मीट टुगेदर, नहीं, when Chenab and Satluj meet together, that is called as the Panchanad, because you are bringing 5 rivers together now. तो वो पंचनाद फाइनली जाके इंडस में मिलता है एट मिठानकोट. ओके, पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की एक जगह है, वहां पे द इंडस रिसीव्स द पंचनाद एंड वहां से आगे वो इतना सारा रिवर्स आ जाते हैं. ओके, मतलब इतना सारा पानी आ जाता है. इज दिस क्लियर? There is another thing that we need to clarify, the various doabs, because you find multiple, you understand what a doab is, the plain between 2 rivers. Okay, 2 river channels के बीच का जो plain होता है उसको हम doab बुलाते हैं. Okay, so all of these, since you will have multiple rivers over here that are flowing almost parallel to each other, you will have multiple doabs also. Okay, तो first doab जो है ये वाला, you're looking at the Sindh Sagar doab. Okay, it lies between the Indus and the Jhelum river. Okay, Indus and Jhelum के बीच में जो होता है, that is famously called as the Sindh Sagar doab. Then you have Jhelum and Chenab, है ना, ज and च के बीच में जो है, that is the Jej doab. Okay, उसको Jej doab बुलाते हैं. See, Jhelum, JE and ch for Chenab. Okay, so that is the Jej doab. Then उसके बाद you have the Chenab and the Ravi rivers. Okay, तो Chenab and Ravi के बीच में you have the Rechna doab. Okay, उसको Rechna doab बुलाते हैं. R for Ravi, ch for Chenab. Okay, that is the Rechna doab. Then you have the between the Bias and the Ravi rivers. This is the Bias river and this is the Ravi. Okay, उसके बीच में जो दोआब होता है, that is famously called as the Bari doab. B for Bias and R for Ravi. Okay, वैसे याद कीजिएगा, Bari doab. Okay, and lastly you have the Bis doab, the one between the Bias and the Satluj. Okay, उसके बीच का दोआब जो होता है, that is famously called as the Bis doab. Is this clear? हाँ, याद रहेगा? Okay, ठीक है. And please remember, I repeat again, झेलम एंड रावी जो होते हैं वो दोनों जाके चेनाब को मिलेंगे. ओके, ये रही झेलम. दिस झेलम will go and meet the Chenab over here. The Ravi will also go and meet the Chenab at a lower point. Okay,
एंड फाइनली तो अभी चेनाब के पास काफी पानी आ गया है, फिर चेनाब एंड सतलज पुल मिल जाते हैं, and together after that point when the Chenab and the Satluj meet, after that point the river gets called as Panchanad, and that Panchanad goes and meets the Indus at Mithankot. Okay, is this clear? That finishes off the Indus drainage for us. Okay, ठीक है. रिमेंबर ऑल प्रॉपर नाउंस है, जितने भी प्रॉपर नाउंस है, जितने भी दोआब्स के नाम है, जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, या फिर द प्लेसेस वेयर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स हैपेंस, तो वो सारे याद रखिएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नेक्स्ट यू गो टू द गंगा सिस्टम. ओके, अब इंडस सिस्टम कर लिया, अभी थोड़ा गंगा सिस्टम देख लेते हैं. गंगा जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. ओके, we are saying it is the largest river basin also in India, around 8.6 lakh square kilometers का है. गंगा के दो हेड स्ट्रीम्स होते हैं, एक भागीरथी, दूसरा अलकनंदा. ओके, बट हम सोर्स वाटर भागीरथी का मानते हैं, जो गंगोत्री से निकलता है गौमुख ग्लेशियर से. वी कंसिडर दैट एज द सोर्स वाटर. ओके, so it rises in Gangotri glacier near Gaumukh in Uttarkashi district of Uttarakhand, and there it is called as the Bhagirathi. Okay, and then वो भागीरथी जो है वो आपके अलकनंदा को मिलती है at Dev Prayag, and from there onwards the river is famously called as the Ganga. Okay, can you make out this part? ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो रिवर है दैट इज फेमसली द भागीरथी. ओके, एंड ये जो राइट हैंड साइड से रिवर आ रही है दैट इज द अलकनंदा. ओके, कैन यू सी वो दोनों यहाँ मिल जाते हैं. फिर ये confluence, and you can make out, right, the Bhagirathi is much faster, swifter kind of a river, and the Alaknanda is a shallower flow, like softer river. Okay, so we are saying कि ये दोनों rivers आके मिल जाते हैं यहाँ पे, and इसके बाद और from this point onwards the river famously gets called as the Ganga. Okay, before that we should ideally consider, हम जिस river का head point मानते हैं या source point मानते हैं, that is going to be the Bhagirathi. Okay, this river, ये भागीरथी जो है left hand side वाली, that river actually begins at Gaumukh in Gangotri glacier, and वहां से हम एक्चुअली गंगा का ओरिजिन पॉइंट मानते हैं. ठीक है, चलेगा. पॉइंट आउट, दिस इज कॉल्ड देव प्रयाग. देव प्रयाग, इट इज फेमसली कॉल्ड एज देव प्रयाग. ओके, सो वी से you both sit separately. One sit over here, the other in another row. You cannot sit together, and do not sit around other people, other boys. अच्छा, ठीक है. So now we are saying कि भागीरथी अलकनंदा को मिलती है देवप्रयाग. आफ्टर दैट इट गेट्स कॉल्ड एज गंगा. फिर ये गंगा जो है वो ऋषिकेश से, रिमेंबर रिवर राफ्टिंग करते हैं आप ऋषिकेश में, तो क्लियरली वो वहां पे भी थोड़ा सा उछलती है. फाइनली वो प्लेन्स, इट हिट्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, एंड देन हरिद्वार से आगे वो प्रॉपर प्लेन्स में आ जाती है. इट विल ट्रैवल थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ओके, ये चार प्लेसेस में से ट्रैवल करेगी. अगर प्लेन्स ही पकड़ने हैं, इफ यू गोइंग टू काउंट द प्लेन्स इटसेल्फ, देन इट इज गोइंग टू बी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ऐसे तीन स्टेट्स में से ट्रैवल करेगी. एंड देन उसके बाद भी, बिकॉज इट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट और डिपॉजिट, इट विल गो एंड डिपॉजिट ऑल दैट, स्प्लिट हो जाएगी. डिस्ट्रीब्यूटरीज, दो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है उसकी, एक भागीरथी, दूसरी हुगली. ओके, एंड देन फाइनली जाके वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बड़ा सा डेल्टा बना ली. ओके, दैट इज द गंगा फॉर यू. इज द कोर्स क्लियर? हाँ, ओके. नाउ सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम इज द पंच प्रयाग. ओके, उत्तराखंड में मिलते हैं आपको. वी आर सेइंग अलकनंदा इज गोइंग टू मीट 5 डिफरेंट रिवर्स, एंड एवरीवेयर दैट द अलकनंदा मीट्स अ रिवर, वहां पे एक प्रयाग बनता है. प्रयाग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस. ओके, तो वो जो प्रयाग्स है, 5 प्रयाग्स, दे आर वेरी फेमस एंड दे कीप आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस, सो यू शुड नो व्हिच रिवर्स दे आर एंड एट व्हाट पॉइंट दे मीट. ओके, ये फेमस चीज है. तो वी आर सेइंग दो इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम्स है अपने गंगा के, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा. ओके, सो ये जो ब्लू वाली है दैट इज गोइंग टू बी द अलकनंदा ओवर हियर, एंड द ब्राउन कलर्ड रिवर इज द भागीरथी. ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू द नेम कलर्स ऑफ द रिवर्स. अभी ये जो भागीरथी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू हो जाती है. ओके, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड. ओके, एंड अलकनंदा जो है वो सातोपंथ नाम का ग्लेशियर है बद्रीनाथ के यहाँ, वहां से शुरू हो जाती है. ओके, नाउ the river does not get called as Alaknanda right from the beginning. What happens is, वहां पे वो विष्णु गंगा नाम की जो रिवर होती है वो जाके धौली गंगा को मिलती है. ये जो ऊपर का पार्ट है ना, दिस पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज विष्णु गंगा. ओके, दैट मीट्स द धौली. ओके, वो धौली गंगा को मिलती है.
एंड जिस पॉइंट पे वो मिलती है दैट इज कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग और जोशीमठ. ओके, दैट प्लेस इट्स अ वेरी फेमस प्लेस. कुछ साल पहले वहां पर कुछ द वॉल्स वर क्रैकिंग अप एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग बिकॉज इट्स अ साइस्मिकली वल्नरेबल प्लेस, राइट. हिमालयस में है तो साइस्मिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो जगह, थोड़ी सी क्या अनस्टेबल है. सो वो वहां पे वो चीज हो रही थी. सो वी आर सेइंग ये विष्णु प्रयाग या जोशीमठ के पास पहले विष्णु गंगा एंड धौली गंगा मिलते हैं. ओके, उसके बाद द रिवर फेमसली गेट्स कॉल्ड एज द अलकनंदा. ओके, वहां से वो रिवर का नाम अलकनंदा आता है. फिर और आगे जाइए, यू आर सेइंग यहाँ पर वी आर सेइंग दिस इज द विष्णु गंगा, दिस इज द धौली गंगा. दे बोथ मीट टुगेदर टू फॉर्म द अलकनंदा. ओके, फिर अलकनंदा नीचे आती है. कैन यू सी द नंदाकिनी ऑन दिस साइड, येलो कलर की रिवर. So that Nandakini meets it over here, okay? And जहाँ पे वो जगह मिलती है, where the Nandakini and the Alaknanda meet, is called as the Nanda Prayag, okay? That famously gets called as the Nanda Prayag. Then एक पिंडर आती है, पिंडर नाम की रिवर आती है, that goes and meets the Alaknanda just a little downstream. That gets called as the Tarna Prayag, okay? That is called as Tarna Prayag. अभी हो गए हमारे लेफ्ट बैंक के रिवर्स, ओके? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए. नाउ यू मूव ऑन टू द राइट बैंक. ये केदारनाथ के यहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है, ओके? So that Mandakini, not exactly near Kedarnath, closer to Kedarnath, okay? So वो मंदाकिनी रिवर निकलती है और वो मंदाकिनी जाके अलकनंदा को मिलती है. The place where it meets the Alaknanda is famously called as the Rudraprayag, okay? And lastly, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा को at देवप्रयाग, and from there onwards the river gets called as Ganga. Okay, is this clear? Panch Prayag, please remember the names of the 5 rivers and the places that it meets at. उसको मैच द फॉलोइंग कराते हैं. आपको आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं कि मैच द फॉलोइंग कराओ एंड बताओ कौन सा कहाँ होता है. ओके, वेरी रेयरली विल दे आस्क यू कि, एंड इतना आसान सवाल नहीं पूछेंगे कि अलकनंदा एंड भागीरथी जहां मिलते हैं उस जगह को क्या बुलाएंगे. दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन एवर आंसर, राइट. यू विल बी प्रोबेबली आस्क्ड दी 4 प्रयाग मिलेंगे आपको, विष्णु, नंद, कर्ण एंड रुद्र, एंड देन बोला जाएगा कि चलो टेल अस व्हिच रिवर मीट्स ओवर हियर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, ठीक है. So please remember these 5 prayags. These are very important. Yeah. हाँ, अलकनंदा काइंड ऑफ इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, लेकिन हमको एक सोर्स वाटर डिसाइड करना पड़ता है ना उसका. देयर आर सी हेड स्ट्रीम्स माने टू इक्वली इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स जो मिलाकर आपका मेन रिवर बनेगा, ओके? लेकिन सोर्स वाटर आपका एक हो सकता है. यू आर कंसिडरिंग सोर्स वाटर एज वन प्लेस, तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, गंगोत्री को ज्यादा मानते हैं. So we are going to go with Gangotri. Also because that river has the typical flow of the Ganga forward also. It is, Gangotri has all those characteristics of the Ganga, na, of typical Himalayan drainage. It is fast, it is steep, it is quicker, it is usually quite deep and so on and so forth. So वो सब characteristics match हो जाते हैं. तो we'll go with the Gangotri or the Bhagirathi as the source water. Okay? Also because वो बराबर जा रही है अपने रास्ते. So उसको गंगा बुलाएंगे उसके बाद. Okay? ठीक है? All right. Now when we go to the Ganga, अभी हम उसके सारे मेजर ट्रिब्यूटरीज कंसिडर करेंगे. यमुना बीइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओके? अभी यमुना जो है अपनी वो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, आल्सो द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. ओके, गंगा की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट्स गोइंग टू बी द यमुना. एंड वो गंगा को राइट बैंक से ज्वाइन करती है. सी पीपल, इफ दिस इज द गंगा, अगर वो गंगा ऐसे जाएगी तो यमुना उसके किस साइड से ज्वाइन करती है? राइट साइड से ज्वाइन करती है ना. तो इट इज मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, वेट. See, this is the गंगा. हाँ, ये जो है ये अपनी गंगा रिवर है, the one that I'm tracking. See, this is the यमुना रिवर जो ऑलमोस्ट गंगा को पैरेलल निकलती है एंड देन जाके गंगा को ज्वाइन करती है. किस साइड पे ज्वाइन कर रही है? राइट हैंड साइड पे. गंगा किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट वर्ड्स जा रही है. तो ये किस तो हाँ, ये भी राइट हैंड साइड से ईस्ट वर्ड्स जा रही है. सो दिस इज एन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. ओके, तो इंडिया की फेमसली गंगा की फेमसली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. एंड इट राइजेस इन द यमुना का वो ओरिजिन देख लीजिएगा. इट राइजेस इन द यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपूंछ रेंज. ओके, बंदरपूंछ या बंदरपूंछ रेंज जो है तो वहां पे मिलेगा आपको. एंड वहां से उसका अभी खुद की यमुना की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है दैट इज चंबल. ओके, एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज कंसिडर्ड एज द रिवर टॉन्स. ये नजर आ रही है आपको ऊपर से, ये टॉन्स करके रिवर नजर आ रही है. दैट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना. ओके, लॉन्गेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज चंबल. प्लीज रिमेंबर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. एंड उसके 4 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हिंडन, रिंद, सेंगर एंड वरुणा. I'm sorry, that's just the way it is. ये आपको by heart करने पड़ेंगे and that is how you will remember it. There is no other way of there is no other way around it. You'll just have to remember the names of rivers. Mnemonics कर लीजिए, उसका कुछ phrase बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, but that's how you're going to remember it. Okay?
ठीक है। सो हिंदन, रिंद, सेंगर एंड वरुणा, ऐसे 4 ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं आपको लेफ्ट बैंक की तरफ से आने वाले, मतलब ऊपर से आ रहे हैं यमुना की तरफ। और नीचे से जो जाएंगे, दे आर फेमसली, यहाँ पे टॉन्स नजर आ रही है जो नीचे आती है। यू हैव द चंबल ओवर हियर, द सिंध, द बेटवा एंड द केन रिवर्स। ओके, केन, बेटवा, सिंध एंड चंबल एंड टॉन्स। ओके, दीज आर गोइंग टू बी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अभी चंबल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट राइजेस नियर माउ इन मालवा प्लेटो ऑन द स्लोप्स ऑफ विंध्यास। एंड चंबल के खुद के ट्रिब्यूटरीज आर बनास, जो अरावलीज में राइज करती है, काली सिंध एंड पर्वती रिवर्स। ओके, दोज आर द फेमस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल इटसेल्फ। ओके, एंड ये गंगा को जाके कहाँ ज्वाइन करती है? यमुना, प्रयागराज के पास, है ना, एट इलाहाबाद, जो हम पहले इलाहाबाद बुलाया करते थे, तो बट प्रयागराज नाउ। सो दैट्स गोइंग टू बी द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। ओके, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, अभी गंगा की एक यमुना हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब बाकी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सोन, पुनपुन, दामोदर। ओके, ये टुगेदर मिलकर यमुना, सोन, पुनपुन एंड दामोदर आर गोइंग टू बी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सोन। सोन फेमसली राइजेस ऑन द अमरकंटक प्लेटो। सोन रिवर वहां पे इसलिए फेमस है बिकॉज अमरकंटक प्लेटो इज काइंड ऑफ लाइक दोस पैटलैंड्स, राइट, ऐसे स्टेयरकेस टाइप्स का पैटलैंड्स टाइप होता है। तो वहां से जब वो रिवर नीचे आती है तो इट विल मेक अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, लुक्स वेरी प्रिटी। ओके, एंड गंगा को आरा के पास ज्वाइन करती है वेस्ट ऑफ पटना। ओके, पटना के वेस्ट में एक जगह है आरा करके, वहां ज्वाइन करी। ओके, देन देयर इज द पुनपुन रिवर। आई विल शो यू द सोन रिवर। कैन यू मेक आउट द सोन रिवर ओवर हियर? दिस इज द सोन रिवर। हाँ, ये सोन रिवर है जो यहाँ पे गंगा को जाके ज्वाइन करती है। ओके, एंड दिस इज द टॉन्स जो सेपरेटली जाके ज्वाइन करी है। दिस इज अ डिफरेंट टॉन्स फ्रॉम द वन दैट यमुना का ट्रिब्यूटरी था। वी हैव मल्टीपल टॉन्स ओवर हियर। बहुत सारी रिवर्स को हम टॉन्स बुलाते हैं, कभी कभी उसको तामसा वामसा भी बुला लेते हैं। सो बी केयरफुल हाउ द रिवर नेम चेंजेस बेस्ड ऑन वट एवर रीजन यू आर इन। ओके, सो दिस इज द सोन। उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक रिहांद और एक नॉर्थ कोयल। हाँ, तो दिस इज द सोन रिवर। ओके, वो जाके गंगा को मिल गया। नेक्स्ट रिवर जो है दैट इज गोइंग टू बी द पुनपुन। ओके, अब पुनपुन जो है वो इट ओरिजिनेट्स इन पलामू, झारखंड, and joins the Ganga at Fatwa east of Patna. Okay, and then you come to Damodar. ये रही दामोदर। कैन यू मेक आउट द दामोदर ओवर हियर? हाँ, वो किस में जाके मिलती है? हुगली रिवर में, राइट, इट गोज एंड मीट्स द हुगली। एंड दामोदर की खुद की एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे, बाराकर नाम की। ओके, जस्ट रिमेंबर विच रिवर गोज इनटू विच रिवर। डोंट थिंक कि दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बाराकर, इंस्टेड बाराकर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। जस्ट रिमेंबर हाउ दिस गोज। सो वी आर सेइंग दामोदर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ओवर देयर। वो छोटा नागपुर प्लेटो पे ओरिजिनेट करती है, चांदवा में। एंड देन बाराकर हैपेंस टू बी इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। Whereas बाकी के ट्रिब्यूटरीज जो दामोदर के फेमस है, दे आर कोनार, बोकारो, जमुनिया वगैरह। रिमेंबर दामोदर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल years ago, way back in the 70s, long before we began the दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो फिर हमने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, हमने दामोदर का पानी कंटेन करना शुरू कर दिया, एंड then things smoothened out pretty much. Okay, then things became pretty okay. So we are saying ki it goes ahead and meets the Hooghly, which is a distributary of the Ganga. What is the difference between a tributary and the distributary? ट्रिब्यूटरी माने जो रिवर को पानी लाएगी, नहीं। ओके, लाएगी। ओके, very good. Tributaries join the rivers and distributaries split from the river. Okay, because of the huge silt load or whatever happens to which lies in the course of the river, distributaries split हो जाते हैं वहां से, and तब वो river का ही split है वो, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, that is a distributary. Okay, so Hooghly happens to be a distributary of the Ganga, and Damodar goes and joins that Hooghly. Okay, ठीक है। अभी गंगा के लेफ्ट बैंक पे जाओ। ये जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनको फेमसली आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाने के क्वेश्चंस आते हैं। यू आर आस्क्ड टू अरेंज दीज ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इवन वर्स, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि ये ट्रिब्यूटरीज गंगा को किस पॉइंट पे जाके ज्वाइन करते हैं। ओके, तो आपको वो अलग अलग जगह याद रखनी पड़ेंगी जहां पे वो जाके गंगा को ज्वाइन करते हैं। सो वी बिगिन विद रामगंगा। रामगंगा हैपेंस टू बी द फर्स्ट वन। दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे रामगंगा? कैन यू मेक आउट? सी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैन यू मेक आउट? दिस इज द भागीरथी, दिस इज द अलकनंदा, है ना। ये ऋषिकेश हरिद्वार से पास करते हुए नीचे आएगा। ओके, एंड देन दिस इज द रामगंगा। ओके, ये रामगंगा यहाँ से ज्वाइन करते हुए ऑल द वे, दिस इज द फर्स्ट वन लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा की। ओके, सो वी आर सेइंग द रामगंगा बिगिन इन द इट राइजेस इन द दुधातोली हिल्स इन पौड़ी गढ़वाल। देन उसके बाद वो मेजरली 2 स्टेट्स में से फ्लो करेगी, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में से। ये रिवर फेमसली कॉर्बेट नेशनल पार्क में से पास करती है। रिमेंबर दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहां से पास करती है। दिस इज दैट रिवर दैट पासेस थ्रू इट। ओके, एंड देन गंगा को जाके कन्नौज के पास ज्वाइन करती है। ओके, इट गोज एंड ज्वाइंस द गंगा एट कन्नौज। देन यू हैव द गोमती। ओके,
रामगंगा के बाद आपको ये गोमती रिवर दिखाई दे रही है, लखनऊ जिसके किनारे पे है। लखनऊ हैपेंस टू बी ऑन द बैंक्स ऑफ द गोमती रिवर, राइट? लखनऊ एंड जौनपुर बोथ. सो वी आर सेइंग दिस इज द गोमती रिवर एंड दिस इज द रिवर दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. वी से ये जो रिवर है ये गोमट ताल से निकलती है माधो टांडा के पास पिलबित में. ओके, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज प्लेसेस. वो बांसुरी वासुरी बनाते हैं पिलबित में, बैट्स वैट्स बनाते हैं, नहीं सुना है कभी? बैंगल्स के लिए भी बहुत फेमस है, नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. सो वी आर सीइंग कि गोमत ताल के पास पिलवित में निकलता है. देन ये लखनऊ एंड जौनपुर से पास करते हुए जाती है गोमती रिवर एंड इट लाइज एंटायरली इन उत्तर प्रदेश. दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा जो कंप्लीटली एक ही स्टेट में लाई करती है. ओके, तो मतलब वी आर नॉट, इट इज नॉट गोइंग अक्रॉस द नेशन, इट इज नॉट ट्राइंग टू मूव प्लेसेस. ये सिर्फ एक ही स्टेट में लाई करती है एंड ये गंगा को जाके सैदपुर के पास मिलती है. ओके, इट गोज एंड मीट्स द गंगा नियर सैदपुर. ऑलराइट, फिर आती है घाघरा. ओके, घाघरा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. ओके, ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट, मूव आउट प्लीज. No, there is no point in being so quiet now. Move out, go out. हाँ जी, you and your friend. आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा बाहर जाइए. Okay, now you have the Ghagra. Ghagra इसलिए important है because it is the largest river. Okay, we say largest tributary गंगा की घाघरा है by volume and it is also the second longest tributary after the Yamuna. Okay, remember the name of the glacier जहां से निकलती है. It starts from the Mapcha Chungo glacier in Tibet. Okay, Mapcha Chungo नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और नेपाल में रहेगी. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो वहां से निकलती है तो नेपाल से फ्लो करेगी. तो नेपाल में इट फेमसली गेट्स कॉल्ड एज द करनाली. ओके, करनाली के नाम से निकलती है वो रिवर. फिर उसके बाद वो अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आएगी एंड देन बिहार से फ्लो करेगी. ओके, दैट इज हाउ द घाघरा इज गोइंग टू फ्लो. सो उत्तर प्रदेश एंड बिहार से फ्लो करती है. उसके जितने भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, यू बोथ ऑल्सो लीव द क्लासरूम. इनविटेशन लगेगा मैडम. Okay. The major tributaries are Kali, Tila, Seti, Beri, West Rapti, छोटी गंडक. Okay, these are the major tributaries. ये आपके, अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं. So these are the major tributaries. वो जो काली रिवर है ना, उसको अलग अलग नामों से जाना भी जाता है. It is called as the शारदा और the चौक और the गोरी गंगा और कुटियांगड़ी और महाकाली. Okay, different names. ये names आपको यूपीएससी के एग्जाम में 2-3 साल पहले पूछे गए थे. प्रॉपरली पूछा था कि कौन सी रिवर को इतने अलग अलग नामों से जानते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी शारदा, चौक, गोरी गंगा, कुटियांगड़ी और महाकाली. ऐसे नाम से काली को जानते हैं एंड ये लिम्पियादुरा में ओरिजिनेट करती है इन उत्तराखंड. ओके, दिस रिवर फेमसली फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना, काली रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, एंड देन ये घाघरा जो है ये एक चिसा पानी या शीशा पानी नाम की जो भी जगह है वहां पे एक डीप गॉज कट करेगी. यही रिवर उसके लोअर रीचेस में, व्हेन इट इज इन द उत्तर प्रदेश के लोअर रीचेस में होगी तो इसको शरयू के नाम से जानते हैं. द सेम रिवर ऑन विच अयोध्या इज लोकेटेड. ओके, situated. So we say this is the Sharyu and ये गंगा को छापरा के पास जाके मिलती है. छापरा इन बिहार. Okay, that is where it meets the Ganga. So this is the Ghagra river for you. So until now जितने भी left bank tributaries है उसमें you started with the Ram Ganga, then the Gomati and then the Ghagra. Okay, move forward, you go to the Gandaki or Gandak. Okay, ये रही आपकी घाघरा. कैन यू मेक आउट द घाघरा जो यहाँ से शुरू होकर आई है? हाँ, दिस इज द घाघरा रिवर एंड दिस ये वापस नेपाल से शुरू होकर आने वाली वापस गंडक रिवर. ओके, वी आर लुकिंग एट द गंडक ओवर देयर. तो अभी गंडक रिवर जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर स्ट्रीम्स. एक वो काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा या त्रिशूली नाम के दो रिवर्स है. तो वो जब मिल जाते हैं तो उसका वो बन जाता है गंडक या गंडक. ओके, ठीक है. तो काली गंडक जो है एक स्ट्रीम, वो नेपाल में राइज करती है अमंग द रेंजेस ऑफ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट. यू लुकिंग एट दोस रेंजेस. ओके, नेपाल में रिवर का नाम है नारायणी और सप्तगंडकी. ओके, द रिवर इन नेपाल इज कॉल्ड एज नारायणी और सप्तगंडकी. नेपाल से आने वाली दो मेजर रिवर्स है हमारे पास, एक घाघरा एंड दूसरी गंडक. ओके, घाघरा का नाम नेपाल में क्या था? करनाली. एंड व्हाट वाज गंडकीज नेम इन नेपाल? सप्तगंडकी और नारायणी. ओके, नारायणी और सप्तगंडकी इज द नेम इन नेपाल. ओके, अब ये एक बहुत डीप गॉज फॉर्म करती है विच इज कॉल्ड एज द काली गंडकी गॉज और द अंधा गलची. सो ये अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी के बीच में एक गॉज फॉर्म करती है. अंडरस्टैंड व्हाट गॉज इज ना? यू आर सेइंग कि माउंटेन्स के बीच में जो एक डीप वैली सा क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेट स्टीप वैली, दैट इज कॉल्ड एज अ गॉज. ओके,
तो दिस इज इन ये नेपाल में सिचुएटेड है एंड इट इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड आल्सो, ओके, गंडकी का गॉर्ज। एंड इसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी एंड माड़ी, ऐसे नाम के ट्रिब्यूटरीज है उसके, ओके। रिमेंबर देम, आई नो अदर वे ऑफ डूइंग दिस। एंड ये इंडिया को बिहार में एंटर करती है चंपारण में, एंड देन गंगा को सोनपुर बिहार के पास मीट करती है, ओके, दैट इज व्हाट इट डज। एंड ये भी रिवर बार बार अपना कोर्स चेंज करती है बिकॉज क्लियरली वो बहुत ज्यादा सिल्ट लाती है, सिल्ट को बीच में डाल देती है, देन इट हैज टू गो अराउंड द सिल्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यू गो टू द कोसी रिवर, ओके। कोसी फेमसली एंटीसेडेंट रिवर है, जैसे हमारी सतलज वगैरह थी वैसे, तो कोसी इज एन एंटीसेडेंट रिवर, ओके। ये तिब्बत में राइज करती है एज द अरुण कोसी, विच इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द कोसी। एंड देन अरुण कोसी सन कोसी से ज्वाइन हो जाती है, अरुण कोसी एंड सन कोसी ज्वाइन कर जाते हैं फ्रॉम द वेस्ट, एंड तामुर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। सो यू विल हैव सन कोसी फ्रॉम द वेस्ट, तामुर कोसी फ्रॉम द ईस्ट, एंड ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे। उसके बाद रिवर को सप्तकोसी बुलाएंगे, ओके। यू विल यूजुअली नॉट बी आस्क्ड सच क्वेश्चंस, इतना नहीं पूछते हैं आपको कि कौन सी रिवर कहाँ ज्वाइन करती है। कोसी के बारे में आपको शायद मे बी इतना पूछेंगे कि उसको सौरव ऑफ बंगाल बुलाते हैं, सौरव ऑफ बिहार बुलाते हैं, कि उसकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होगी तो वो पूछेंगे आपको, एंड एंटीसेडेंट है कि नहीं ये पूछते हैं, ओके। वेरी रेयरली विल यू बी आस्क्ड ईच एंड एवरी ट्रिब्यूटरी। उन्होंने एक बार जब आपको काली के बारे में पूछा था, तो काली रिवर का बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट हैपेंस टू बी द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ऑल्सो बिकॉज उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, हिस्ट्री हिस्टोरिकली फेमस है, मिथोलॉजिकली फेमस है, तो रिवर फेमस है इसलिए आपको पूछा था, ओके। यू विल प्रोबेबली नॉट बी आस्क्ड कि, प्रोबेबली आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज यूपीएससी का कौन भरोसा दे कि सन कोसी एंड तामुर कोसी कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ओके, दैट इज, बट सन कोसी तामुर कोसी यू विल नो कौन सी रिवर में जाएंगे, कोसी में जाएंगे, राइट, अग्री। सो नाउ यू से कि कोसी रिवर जो होती है वो महाभारत रेंज एंड शिवालिक हिल्स के अक्रॉस कट कर जाएगी, एंड गंगा को कुर्सेला बिहार के पास जाके ज्वाइन करती है, ओके, ठीक है। एंड ये भी फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती है, इसको फेमसली इट इज कॉल्ड एज द सौरव ऑफ बिहार, ओके। एंड लास्टली द वेरी लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज गोइंग टू बी left bank tributary, okay, left bank tributary is going to be Mahananda, okay। ये last left bank tributary है, दार्जिलिंग हिल्स में से राइज करेगी, कहाँ गई महानंदा, ये रही महानंदा, दिख रही है आपको यहाँ पे महानंदा, कैन यू मेक आउट द महानंदा ओवर हियर। ये यहाँ पे सिक्किम दार्जिलिंग हिल्स में राइज करेगी, एंड देन वहां से नीचे आके गंगा को मिलती है, ये गंगा को इंडिया में नहीं मिलेगी, ओके, इट डज नॉट मीट गंगा इन इंडिया, इट मीट्स गंगा एट गोदावरी घाट इन बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश में मिलती है इंडिया गंगा को, ओके। बाकी सारे जो मेजर रिवर्स है वो गंगा को इंडिया में मिलते हैं, लेकिन दिस रिवर द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा महानंदा विल मीट इंडिया आउटसाइड इंडिया, ओके, मीट गंगा आउटसाइड इंडिया गोदावरी घाट पे। इज दिस गुड पीपल? हाँ। और ये रहा गंगा का रिवर बेसिन, दिस इज हाउ द रिवर बेसिन लुक्स लाइक। ये पूरा का पूरा जो बेसिन है, इतना बड़ा एरिया, ये सिर्फ इस रिवर का अकेले का ड्रेनेज बेसिन है, एंड उसमें ये अलग अलग रिवर्स का ये है, लुक, घाघरा का बहुत बड़ा बेसिन है, चंबल का भी बहुत बड़ा है, क्योंकि चंबल हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आल्सो, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आल्सो ऑफ द लार्जेस्ट इज टॉन्स, है ना, लॉन्गेस्ट विल बी चंबल फॉर यमुना, यमुना की लॉन्गेस्ट विल बी चंबल, सो वी आर सेइंग दिस हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आल्सो। यमुना का भी ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है, एंड ये बाकी के रिवर्स का सिंध, बेटवा, केन, टॉन्स, सोन, है ना, पुनपुन, दामोदर, हुगली, ये लोअर गंगा के रीचेस में क्या मिलता है, दिस इज द पद्मा, महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, व्हाट इज दैट, शारदा का सेपरेट बना लिया उन्होंने, एंड देन यू हैव द अपर गंगा बेसिन, ओके, रामगंगा का। इज दिस गुड पीपल? हाँ, you will get a general idea of what this is, okay। I won't start with the Brahmaputra today because we just have another 4 minutes left, and I need to confirm if you guys are going to be doing this. Hanji, what is a barrage? It's a shorter, smaller version of a dam. A smaller version of a dam. What is a dam? Essentially, it will block the water, right? And then whenever need be, it will let the water out, and you can control the levels of water in the river and so on and so forth. The barrage is a similar object. It's a similar function. It has a similar function. We have not done any of the peninsular rivers, so no फायदा, यहाँ पे जाने का फायदा नहीं है। ये आपने दो ही किए, चलो दो तो बताइए इसमें से मुझको, दो रिवर्स को तो मैच कीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस है, और इनके ट्रिब्यूटरीज है शिगर, मानस एंड महानंदा। गंगा की और इंडस की तो ट्रिब्यूटरी बताइए मुझको। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अभी लास्ट महानंदा, महानंदा डिस्कस किया ना, अभी अभी बोला महानंदा है, सो वी आर गोइंग विद 1C।
हाँ, तो एंड इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? मानस करके इंडस की ट्रिब्यूटरी सुनी क्या हमने? नहीं। शिगर, गास्तिंग, शोक, नुब्रा, है ना, ऐसे ट्रिब्यूटरी सुने थे। तो व्हाट वाज इंडस का ट्रिब्यूटरी? शिगर। सो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र, अरे यार वो मानस नेशनल पार्क है ना वहां पे ब्रह्मपुत्र में, वो असम में, तो वो क्यों जाएगा इंडस के पास कोई रिवर वैसे उस नाम का, है ना? तो वील ऑल्सो गो विद ब्रह्मपुत्र मानस। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी सी बी ए, सी बी ए, ये वाला आंसर। कल हम ब्रह्मपुत्र कवर करेंगे, बट स्टिल, which drainage pattern does Loktak Lake in India exhibit? Annular, drainage, pinnate या centripetal? Centripetal, absolutely. Loktak Lake is a famous intermontane basin. आसपास पूरे mountains है, तो mountains का जो higher reaches से जो भी पानी आता है वो सीधा इसी basin में आता है, लोकतक लेक में आता है. Okay, so we are going to say that this has a centripetal drainage. Which of the following rivers is an example of antecedent streams? Satluj, Chenab, Ravi, Bias. सतलज, सतलज इज फेमसली एन एंटीसेडेंट ड्रेनेज, है ना? वो पहले एग्जिस्ट करती थी बिफोर द हिमालय स्टार्टेड टू कम आउट, क्योंकि वो इंडस इसके बाहर भी राइज करती है ना, हिमालयस के बाहर भी राइज करती है. सो क्लियरली दैट इज द थिंग. Okay, next question. Which of the following is not a characteristic of the Himalayan drainage? Deep gorges, rapids, waterfalls in the upper course of the river, perennial rivers, older than the peninsular drainage of India, and rivers frequently shift courses. Perennial rivers, not a characteristic. We are saying not a characteristic. That is not a characteristic of Himalayan rivers कि वो अपने courses frequently change करती है. नहीं, वो तो है ना. That is a very important characteristic, right? The rivers carry a lot of silt, है ना? They carry a huge amount of silt, and obviously because they will drop that silt in the middle of the course, they cannot go through that silt, so they'll have to change the course. So they do change courses. Do they have deep gorges, rapids, and waterfalls in the upper course? Yes, yes, absolutely yes. They are very swift rivers, very fast rivers, and they usually have a large amount of flow even at the beginning of the course. Okay, so they do, form all these erosional landforms over there. पेरिनियल है, हाँ पेरिनियल है. अभी आगे ओल्डर देन द पेनिनसुलर ड्रेनेज. हमने जब इंडिया को पढ़ा था, वेरी करेक्ट, हमने जब इंडिया को पढ़ा था, व्हेन वी हैड स्टडीड इंडिया, व्हाट डिड आई से? व्हिच पार्ट्स केम फर्स्ट? ईस्टर्न घाट्स, देन द अरावलीज, देन द विंध्यास, है ना, पेनिनसुलर प्लेटो, द धारवाड़ प्लेटो, दैट ऑल केम फर्स्ट, राइट? And the Himalayas came way later. And since the Himalayas came way later, obviously the Himalayan plains and the rivers also came way later. Okay, so obviously that is not older than the peninsular drainage. The peninsular drainage is way, way older than the Himalayan drainage and far more graded. Graded meaning, how do I say graded? मीनिंग सी, कोई भी रिवर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि वो कितना इरोड करेगा नीचे तक, राइट? बेस लेवल तक कितना इरोड करेगा, उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है. सो उसको ग्रेडेशन कहते हैं कि दोज रिवर्स आर ग्रेडेड. सो ये हिमालयन रिवर्स से ज्यादा, कहीं ज्यादा दिस रिवर्स आर ग्रेडेड, पेनिनसुलर रिवर्स आर ग्रेडेड, क्योंकि वो बहुत सालों तक वो अपना घिस रहे एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड, इरोजन हो ही रहा है एंड देन क्लियरली नाउ द इट हैज ऑलमोस्ट रीच द बेस लेवल, बहुत हद तक वो बेस लेवल तक रीच कर गया. Okay, so this is not the thing over here. ये सही नहीं है, older than the peninsular drainage. और क्या करेंगे? चलो जी, ये वाला बताइए. Which of these statements about the Indus River are correct? Indus originates in the Kailash mountain. It is also called as Langchen Khambab in Tibet region, and Indus passes through the Ladakh and Zanskar ranges. कितने sentences correct है? 1 and 3 are correct. What is Indus actually called? Singi Kamban. Indus is famously called as the Singi Kamban in Tibet region. Langchen Khambab किसको बुलाते हैं? सतलज को. सतलज gets called as the Langchen Khambab. Okay, चलेगा? अगर आपका लेक्चर है, ओह श्योर सर, नो प्रॉब्लम.